और उसके बाद स्पेशली पीपल हु हैव नो इंटरेस्ट इन गायनी, the last thing they want to listen to is abortion. So I'll try to reduce your misery to the maximum and don't take very long. Lekin there are a few important issues at hand that need to be addressed. Failure of acquired, 50% of the pregnancies survive and 50% don't. But usse bhi zyada frustrating hai is trying to find a cause for those miscarriages as to why do those pregnancies miscarry. And telling a couple that it was just what God meant to be, or as simple as it's just a genetic error, in today's time and age is probably not valid enough. People not only want answers, they want solutions as well. So जब कोई अच्छा समझदार डॉक्टर है जिसके बारे में 2 घंटे बैठ के तो उसके सामने जाते हैं और आगे से वो डॉक्टर कहता है in between lines in a very polite way, I have no idea what happened to your pregnancy and I have got no solution to offer. So then the patients do come out a little dissatisfied and frustrated as well. कि अभी तक इनके पास एक सिंपल सी प्रॉब्लम दैट इज ह्यूमन प्रेगनेंसी, उसकी सर्वाइवल के सोल्यूशन क्यों नहीं. बट अमिड्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी डू हैव सम ऑफ द आंसर्स. और जो हमारी नॉलेज रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी ग्रोज, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ग्रोइंग एट अ पेस दैट वी वुड लाइक. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ह्यूमन एम्ब्रियो और ह्यूमन प्रेगनेंसी पे रिसर्च बैंड है एंड फॉर गुड रीजंस. हम में से कोई भी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि प्रेगनेंसी के ऊपर लाइक एनी अदर थिंग रिसर्च की जाए. इन अदर वर्ड्स ह्यूमन प्रेगनेंसी को सब्जेक्ट किया जाए एज अ रिसर्च टूल. सो द नॉलेज इज ट्रिकलिंग इन वेरी वेरी स्लोली, बट इट इज कमिंग इन. नाउ द रियल इशू नाउ वी नो इज इम्प्लांटेशन. The pregnancy is conceived in the tube, which spends about 3 days in the tube, travels to the uterus, sticks to a wall and starts to grow. वो जो ट्रांजिट और उसके बाद यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ के ग्रो करने का पीरियड है, नाउ वी रियलाइज कि एक प्रेगनेंसी की लाइफ में वो सबसे क्रिटिकल है. एक प्रेगनेंसी जो कि अच्छा इम्प्लांट करती है, उस प्रेगनेंसी की सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बेहतर होते हैं. सो वंस वी न्यू दैट, we have started to shift our focus towards the implantation phase. In other words, what makes a pregnancy implant? Now we know that the endometrium becomes receptive, and now we know enough that not only that the endometrium becomes receptive, the endometrium is timed. In other words, एक normal menstrual cycle में 20वें से 21वें दिन are the only 2 good days जिसमें उस यूट्रस में वो प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करें. हम हमेशा से सारा जोर 14वें दिन की ओवुलेशन या 10वें दिन की ओवुलेशन पे देते हैं. What we never realized was कि इसके 7 से 8 दिन बाद वाला पीरियड इससे बहुत ज्यादा है. In other words, कि अगर वो एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन उन 2 दिनों से मिस करती तो एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी भी इम्प्लांट नहीं करेगी, क्योंकि the endometrium is not implantable. So how does it start? सबसे पहले the embryo is sticky. It comes right next to the endometrium, जिसको opposition कहते हैं. उसके बाद because it is sticky, it sticks to the wall of the endometrium, जिसको आप adhesion कहते हैं. और उसके बाद it starts to leak out things which break down the wall of the endometrium, और आहिस्ता आहिस्ता एक वहाँ छोटा सा crater सुराख बनाना शुरू करते हैं embryo, and it starts to go deeper into the endometrial cavity till a time comes कि इसके ऊपर एक एंडोमेट्रियम की लेयर आ जाती है. दैट इज लाइक कि आपको एक बीज दिया जाए, आप जमीन पर रखें और वो बीज खुद ही मिट्टी के अंदर उतर जाए और उसके ऊपर मिट्टी आ जाए. जो काम हमें करना पड़ता है वो नेचर खुद करे. एंड वंस दैट हैपेंस, वी नो द ट्रोफोप्लास्ट स्टार्ट्स टू ग्रो. लेकिन द ग्रोथ ऑफ ट्रोफोप्लास्ट जो कि हमेशा से हमें माइक्रोस्कोप पे नजर आता था, उसके बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स हमें कभी भी समझ नहीं आए. And the question was, why does one embryo grow and the other doesn't? Why does one embryo generate a good placenta and the others doesn't? Now obviously, one of the factors would be a good endometrium. And we and you, all of us, we do time the endometrium, we grade the endometrium, we measure the thickness of the endometrium. अगर एक अच्छी मोटी एंडोमेट्रियम है तो प्रेगनेंसी को अच्छा लेगी. अगर एक छोटी एंडोमेट्रियम है 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर, वो प्रोबेबली अच्छी प्रेगनेंसी को रिसीव नहीं करेगी.
So the biochemical factors that make a pregnancy grow are to some extent inflammation related. Now जिस जगह पे सेल ब्रेक डाउन करते हैं उस जगह पे प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं और इनमें से there are certain ones just like TH1 or TH2. They are more important for the continued growth of the endometrium, of the embryo into the endometrium. And what actually happens is that there is a delicate balance between these two cytokines which are products of inflammation, and one of them, TH1, is anti-fertility and TH2 which is pro-fertility. And locally, close to the embryo, there is a decent balance between them. अगर TH1 predominant हो जाए, तो then pregnancy के ज़ाया होने का चांस होता है, और अगर TH2 predominant हो, तो pregnancy के survive करने के chances बेहतर हो जाते हैं. So basically, once we focused upon that, we started to look for factors कि जो local inflammatory response को modify कर सकें और modulate कर सकें. So in other words, we generate things which are pro-fertility and which help a pregnancy in growing. And that is when we came up with a factor known as PIBF, which is progesterone-induced blocking factor. And what this factor does, it's a small protein. ये basically local inflammation को modify करता है और TH1 values को reduce करता है. So एक ऐसी pregnancy जो कि अच्छा PIBF खुद secrete करती है, उस pregnancy की survival बेहतर होती है, और जो pregnancy अच्छा secrete नहीं कर पाती, उसमें PIBF के levels कम होते हैं अमूमन. So basically, this is a factor which is seen in pregnancy, is not seen in a regular menstruating endometrium. And in a healthy pregnancy which grows, the level keep on growing up in the early part of pregnancy. लेकिन अगर ऐसी pregnancies जिनमें miscarriage हो, अगर हम levels को measure करें, they are low. Now, granted that this is indirect evidence, this does not directly prove कि ये factor ही pregnancy को बचाता है. लेकिन what we can say is that this is a factor which promotes the growth of pregnancy. There may be many more. Maybe जो असल important link है we have not found out as yet. Maybe it is another 10 years कि हमें जाके पता लगे कि actual चीजें क्या हो रही हैं. लेकिन this is certainly the tail of the elephant कि कम से कम हमें कुछ पता लगना शुरू हो गया कि local biochemical factors have a very important role into the progress of the pregnancy. The research models that we have in a mouse, if you make their serum anti-PIBF and the mouse जिसमें anti-PIBF serum मौजूद हो, उसकी साइट जो है प्रेगनेंसी की वो प्रॉस्पर नहीं करेगी जब एक नॉर्मल सीरम वाली साइट करेगी. So there is some collaborative evidence कि if the PIBF is removed from the serum, the pregnancies do not grow very well. Granted, there are no human studies directly available, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में human studies कभी available होंगी, because we cannot experiment upon these details. So basically, जिस जगह पर PIBF हो, वहाँ inflammation की killer और natural killer activity कम हो जाएगी, and survival of the pregnancy is enhanced. RU486 is anti-progesterone, mifepristone, and what this actually does is blocks out all the progesterone, and we see कि जिस जगह पे RU486 सिस्टम में आ जाए, उस जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है. So progesterone का direct role into the safety of a pregnancy does exist, and as days go by, we realize कि progesterone जिसका role हमने over the years diminish समझना शुरू कर दिया था, आगे जाके और important होना शुरू हो गया. Even progesterone का role अब in preterm labor आता जा रहा है. We have started to give progesterone in the late part of pregnancy in threatened preterm labors. So on the clinical side, like I've said, up to 50% of the pregnancies are lost. There are multiple reasons. Corpus luteum शुरू में pregnancy को support करता है, and corpus luteum does that by secreting progesterone. Early on in pregnancy, corpus luteum is removed, the pregnancy miscarries.
So एक चीज तो established है कि progesterone in the early part of pregnancy is vital. Now a term which we have been using for a very long time is luteal phase insufficiency, and what it actually means is a bad corpus luteum. एक ऐसा corpus luteum जो adequate amount में progesterone ना बनाए और pregnancy को adequately support ना कर सके. We went from a time कि जब we thought it was very important to a time when we used to say that corpus luteum insufficiency does not exist. इस नाम की कोई चीज नहीं होती. But slowly and gradually we have started to come back to a point, saying it may not be the most important factor. लेकिन there are pregnancies जिनमें luteal phase insufficiency is contributory to the pregnancy loss. और इसकी स्टडी करने की आगे जरूरत और है. Normal progesterone levels आपको पता है pregnancy skyrocket. The system is flooded with progesterone, all for good reason. And basically, जहाँ miscarriage होती है, वहाँ early on, हमें कई patients में a drop in progesterone readings मिलता है. This is not universal, but it does present in a significant number of patients. So, one, we have established that progesterone is very important for the well-being of pregnancy. Second, we have established that there are certain pregnancies कि जिनमें there is a local deficiency of progesterone, and third, we have established that giving progesterone might be beneficial for these pregnancies. And the mechanism that I have proposed is that progesterone works through a protein which is known as PADF, and what progesterone does is it enhances the local level, pregnancy वाले level पे, endometrium वाले level पे जाके the level of PADF, और जो PADF का लेवल प्रेगनेंसी में एनहांस करता है, प्रेगनेंसी की सर्वाइवल फिगर्स बेहतर हो जाती है. सो अगर आप बाहर से प्रोजेस्टेरोन देते हैं, बॉडी की अपनी नेचुरल प्रोजेस्टेरोन तो इंड्यूस कर ही रही होती है PADF को बता. बाहर से इफ यू गिव अ गुड प्रोजेस्टेरोन लाइक डाइड्रोगेस्टेरोन व्हिच इज ड्यूफेस्टोन, तो इट डज प्रमोट लोकल रिलीज ऑफ PADF, and this can help into reduction of recurrent miscarriages and miscarriages of undetermined cause. So giving progesterone and dydrogesterone in pregnancies which are threatened with miscarriage is beneficial, and dydrogesterone, which is ड्यूफेस्टोन, is a good method to actually give these patients the extra support by progesterone which is required. Thank you.